Ben needs the link. Can you send him the webinar link to the webinar? Ben is asking. Yeah. You're sending in panelists or you're sending in regularly or panelist one? Hi, Aaron sir. Hi, how are you, Kashyap? All good, all good. Good What to about see you. Same here, sir, same here. Yes. Okay, good. Let's So we can actually go live or should we wait to Ben? we should wait for Ben. Ben, I think we have 3-4 minutes. Yeah. Yeah, No problem. we are waiting for Ben. Then. Okay. Good to see you. Same here, sir. Same here. Yes. Hi, Ben. Hello. How are you? Good, Keshav. How are you? All good, all good. Good to see you. Good to see you too. Ready? Are you Yeah, yeah. ready, Ben? Hi, Aaron sir. Let's go I live. think there are how many participants are there in the queue? How many? Participants are there in the queue. I don't know. I need to go live in order to see. Okay. So let's go live. Yeah. Okay, guys, good luck. And Keshev, as always, thank you for your support and help. No, sir. It's my duty. Okay, Yes. thank you. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शून्य एंड आई नो फर्स्ट के इस वेबिनार पर, जहां पर हम लोग मार्केट्स की बात करने वाले हैं, ट्रेंड्स की बात करने वाले हैं, एआई की बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किस तरह हम मार्केट को प्रोडिक्ट कर पाएंगे, या कहें तो किस तरह एआई हमारी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक्स वेयर वी कैन इन्वेस्ट। सो मेरे साथ आई नो फर्स्ट से मिस्टर यारोन एंड मिस्टर बैन रूबिन है।
जो हमें आज गाइड करेंगे किस तरह से आईनो फर्स्ट जो है उसकी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एआई के थ्रू स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। So, hello, Yaron sir. Hello, Ben. Thank you for joining this great webinar. And we have the great audience here, which who are waiting for you. Thank Hello, you. Keshav. Nice to see you again. Same here, same here. Yeah. So we are waiting for 2-3 minutes. Then more members should join. Then we'll start. तो कुछ लोगों का हम वेट कर लेते हैं, कुछ और भी जो हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, देन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वेबिनार को और लेके चलते हैं आपको एआई की दुनिया में, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका वेट कर रही है कि कैसे हम उसका यूज करके स्टॉक मार्केट की जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं। Okay, so thank you and hello to everybody that is here. We have a really interesting webinar today. We're going to see what happened in the markets, in the Indian markets, in the last few months, in the last month, in the last weeks. And of course, in the end, we have a surprise for you guys, and we're going to see what's the algorithm thinks about the Indian market for the next week. So it's a really interesting webinar today, and I hope you'll enjoy it. We're going to start in 1 or 2 minutes. So thank you for your patience. We're just seeing a lot of other people are joining right now. So 1 minute and we're going to start. श्योर मैन। सो आज का जो वेबिनार है वो इस चीज से रिलेटेड है कि किस तरह हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, किस तरह से एआई हमारी हेल्प कर सकता है स्टॉक्स फाइंड आउट करने में, किस तरह एआई की हेल्प से हम घंटों की मेहनत को चंद सेकंडों में या चंद मिनटों में पूरा कर सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे हर जगह, हर फील्ड में एआई का यूज हो रहा है। सो हमारा स्टॉक मार्केट जो कि इतना एडवांस है, वो इस एआई से दूर कैसे रह सकता है। सो आने वाला जो टाइम है वो तो स्टॉक्स का है, क्योंकि जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि इंडेक्स में जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो अब बहुत सीमित हो गई है। सो अब देखते हैं ये जो क्राउड है ये किस तरफ शिफ्ट होता है, स्टॉक्स की तरफ जाता है या फिर ये क्राउड इंडेक्स में ही काम करेगा। सो लेट्स सी कहाँ जाती है। सो हम कुछ 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ और जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं वो एक बार जुड़ जाए, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ छूट ना जाए किसी के लिए भी। Okay, I see. Hello, everyone. I see a lot of people that raising their hands. Please use the Q&A window in order to ask questions. During the webinar, we are going to see some live examples, some recent examples, some live predictions, and we are going also to try to answer all the questions that you are asking in the Q&A. So feel free to write down all your questions. Ben, let's start quickly with the disclaimer, and then we will start. Yeah, sure. So I know first, the daily market forecast does not provide personal investment or financial advice to individuals or act as a personal financial, legal, institutional investment advisors or individual advocate to purchase or sell any security investments to use a particular financial strategy.
So basically, this is not advisory, and this is only for learning and instructions and guidance purposes only. And so that's the disclaimer, and I think we can start. Sure. Let's start. Hello, it's really great to see so many people today in the audience. I'm going to start with a quick introduction of I know first the technology, the team, and our core products, and also the clients. So I know first, we are AI fintech company. Our main solution is a predictive algorithm that basically generates a daily prediction for the financial market and identifies the most promising investment opportunities. We are utilizing artificial intelligence, more specifically deep learning, artificial neural networks, genetic algorithms to predict the financial markets. Our predictive algorithm is generating daily forecasts for over 13,500 assets from different asset classes. Stocks, but also ETFs, commodities, currencies, cryptocurrencies, indices, with daily forecasts for multiple time frames, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global solution. We are covering over 50 global stock exchanges, including the stock exchanges in India, but also the US, Europe, and basically most of the stock exchanges around the globe. And if we're starting with a quick live example from the market today, we can see today's mid-cap short-term forecast. We can see 4 stocks in these examples, 2 stocks that the algorithm basically identified as an opportunity for to buy, basically for long position, and 2 examples of stocks that the algorithm is suggesting basically to sell today, or to short sell if someone is able to take those actions as well. And we can see the live performance of those scripts right now in the Indian market. Those stocks belong to the mid-cap stocks universe. And of course, this is just an illustration. It's important to highlight. It's just an illustration. All the clients that are part of the I Know First subscription program in the platform has received those very same scripts today. Please, Keshav. या सो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन से कि आइनो फर्स्ट है क्या, कौन लोग हैं जो आइनो फर्स्ट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आइनो फर्स्ट एक ग्लोबली रिनोड कंपनी है जो कि एआई पावर्ड सिग्नल एंड प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करती है ग्लोबल लेवल पर, नॉट सिर्फ इन इंडियन मार्केट, सिर्फ इंडियन स्टॉक्स पर ही नहीं, बात करें हम तो 13,500 एसेट क्लास के ऊपर जो है डेली फोरकास्ट आता है, स्टॉक्स, ईटीएफ, कमोडिटी, करेंसीज, इंडाइसेस, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, हर तरह के जो भी फोरकास्ट होते हैं वो प्रोवाइड कराती है बेस्ड ऑन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अब जो एआई है वो हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है। सो हमारा स्टॉक मार्केट भी, जैसा मैंने आपको बताया, कि वंचित नहीं रह सकता था इस टेक्नोलॉजी से। सो हम एक एआई आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी हेल्प करेगा स्टॉक्स फाइंड आउट करने में, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने बेहतर है। लाइव एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि आज क्या फोकस किया था और उसके रिजल्ट्स क्या रहे। सो मिनिमम फोकस जो होता है आई नो फर्स्ट को वो 3 डेज का होता है, इंट्राडे फोकस नहीं मिलता, और मतलब आपको जो है मिनिमम 3 डेज से लेके 1 ईयर तक का 6 टाइम फ्रेम्स के अंदर ये फोकस देखने को मिलता है। ज्ञानंद सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो 50 ग्लोबल एक्सचेंजेस पर आपको यहाँ पर जो है प्रेडिक्शंस देखने को मिल जाएंगी, और आज की प्रेडिक्शंस जो इंडियन मार्केट पर थी
वो आप देख सकते हैं 20 स्टॉक्स थे जिसमें 10 स्टॉक्स ग्रीन में मार्क थे और 10 स्टॉक्स रेड में मार्क थे। तो 3 दिन का टाइम फ्रेम था, मिड कैप कैटेगरी से स्टॉक है। तो एक जो है गर्वर टेक्नोलॉजी टेक फाइबर्स लिमिटेड जो है वो स्टॉक था जिसमें आपको 5.5% के आसपास के मूव देखने को मिले इंट्राडे बेसिस पर। और दूसरा था धनी सर्विसेज लिमिटेड जहां पर आपको 7% से ज्यादा के मूव देखने को मिले इंट्राडे बेसिस पर। जहां पर हमारा इंडियन मार्केट प्रेशर दिखा रहा था, वहीं आई नो फर्स्ट के सजेस्ट किए हुए 10 में से 2 स्टॉक्स जो हैं वो अप ट्रेंड दिखा रहे थे। और वहीं अगर हम बात करें सेल साइड के स्टॉक्स की, तो यस, सेल करना इंडियन मार्केट में अलाउ नहीं है, शॉर्ट सेल आप कैरी नहीं कर सकते। बट फिर भी मॉडल जो है वो बाय और सेल दोनों ही रिकमेंड करता है। तो सेल साइड पर आप देख सकते हैं साइड का जो स्टॉक था वो 2.5% के आसपास की गिरावट दिखा रहा था, और दूसरा पॉलीप्लेक्स का जो स्टॉक था वो भी 2% से ज्यादा की गिरावट आपको यहाँ पर दिखा रहा था। सो ये जो आइनो फर्स्ट प्रोडक्ट करता है, ये दोनों ही बेसिस पर करता है कि कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अप ट्रेंड दिखा सकते हैं, कौन से स्टॉक्स जो हैं वो डाउन ट्रेंड दिखा सकते हैं। सो हमने क्या करना है, हमने अपना एक एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है एआई ने कह दिया तो मान लिया, हमने अपना भी साथ में एनालिसिस करके जो है अपनी पोजीशन को क्रिएट करना है। ओवर टू यू यार सर। Thank you. So the I know first predictive algorithm was developed by our R&D team that being led by Dr. Lipa Reutemann from the Weizmann Institute of Science, one of the leading experts in the field of artificial intelligence, machine learning, artificial neural networks with over 20 years of experience. Dr. Reutemann is leading our R&D team that includes PhDs, AI and machine learning experts, data scientists, as well as a math professor from Tel Aviv University, people with the background of data science, computer science, math, statistics, and also IDF veterans, specifically from the intelligence units. Ben Rubin, that is going to lead today the webinar, is the head of our advisory team. Ben used to work for Bank Hapoalim, one of the leading banks in Israel, as an advisor. We have in our team also people with the background of engineering, capital market experts, and financial analysts. My name is Yaron Golger. I'm the CEO and co-founder of I Know First. I'm also serving as the chairman of the Israeli Expert Institute FinTech Board. I'm lecturing for FinTech at the Reichman University, one of the leading universities here in Israel. I'm an engineer with MBA from the Ben Gurion University. In terms of our clients, the I Know First predictive algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, investment houses, banks, family offices, as well as brokerage firms, and also high net worth individuals from all over the world that using the predictive algorithm in order to identify opportunities in the market on a daily basis. In this list, you can find leading hedge funds, leading banks, leading investment houses, as well as family offices. With Meitav, we have recently launched the first AI-powered mutual fund that is being listed in the Tel Aviv Stock Exchange. It's available in the market, and people are using this product that is relying on the I Know First predictive algorithm, basically. यस, सो एक क्विक इंट्रोडक्शन आई नो फर्स्ट की टीम का। सो आई नो फर्स्ट जो आप देख रहे हैं कंपनी जिन्होंने ये एआई बिल्ड किया है, ये डॉक्टर रीता जो है डॉक्टर लिपा रोहितमैन जो है को फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट है इस आई नो फर्स्ट कंपनी के, और इनका मेजर रोल रहा है इस प्रोडक्ट को बनाने में जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बनाता है। साथ ही मिस्टर बैन हमारे साथ है जो कि हेड ऑफ एडवाइजरी सर्विस है आई नो फर्स्ट से, और मिस्टर यारन जो कि को फाउंडर एंड सीईओ है आई नो फर्स्ट के, और साथ ही साथ
ये चेयरमैन है इजराइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट के, जो कि एआई के ऊपर ही अपनी मतलब नॉलेज शेयरिंग के लिए काफ़ी रिनोड इंस्टीट्यूट है. सो thank you, Yaron sir. Thank you, Ben, to be a part of this webinar. और सभी ऑडियंस थैंक्स फ्रॉम द साइड ऑफ ऑल शून्य ऑडियंस जो आपके which are using this product I know first, and some here some are new, so they are also going to try how this AI will help them to take the right decision in the markets. Yeah. सो अगर बात करें हम क्लाइंट्स की, सो आई नो फर्स्ट के जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी सारे फंड हाउसेस, बैंक्स और फैमिली ऑफिसेस, म्यूचुअल फंड्स, एएमसीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज एंड ऑल. सो आप देख सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ अमेरिका, फिनवेशिया, सी कैपिटल, मिताओ जो कि एक फर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली. मतलब अब क्या है कि मतलब एआई का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं ना. सबको ये लगता है एआई हमारे एआई इज नॉट माय कप ऑफ टी, मैं तो इतना छोटा बंदा हूँ, मैं एआई की क्या हेल्प कर सकता हूँ. बट एआई हर किसी का काम आसान कर रहा है. आपके हाथ में फोन है, उसमें भी कहीं ना कहीं पे एआई लगा हुआ है. हर एक चीज में आपको एआई देखने को मिलेगा आज के टाइम पे. और आने वाला टाइम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का ही है. ओवर टू यू यार सर. Thank you. The solution that you're about to see, the I know first predictive algorithm, has received several international awards from different entities, including from UBS, Entity Data in Japan, and also from the Geneva Wealth Tech Forum as the best international AI-powered wealth tech solution. Yeah, here you can see several awards, and also awards from the Indian FinTech Forum. We are offering basically two solutions to our client. The first solution is actually the solution that is available to all Shoonya clients via the platform. It's possible to utilize our I know first predictive algorithm in order to identify opportunities on a daily basis within the Indian market, and to use the cutting edge technology of artificial intelligence in order to identify opportunities on a daily basis in the Indian market across different investment universes, small caps, mid caps, and also large cap stocks. On top of that, we are also developing different financial products, usually in a partnership with investment firms. And we are going to talk about this solution today in the webinar as well. सो आई नो फर्स्ट जो है वो एक अवार्ड विनिंग कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी सारे बदलाव लेकर आई है. और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, इवन ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस पे भी आई नो फर्स्ट जो है एक अलग किरदार निभा रही है अपनी टेक्नोलॉजी से इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आसान बनाने का. सो अवार्ड्स काफ़ी सारे मिले हैं. आई नो फर्स्ट को बिल्डिंगा से अवार्ड मिला है, उसके बाद वेलटेक से अवार्ड मिला है, और भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं जो आई नो फर्स्ट को इंडियन मार्केट में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए या फिर ग्लोबल मार्केट में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने के लिए दिए गए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो एआई जो है ये एक अवार्ड विनिंग एआई एल्गोरिदम है जो कि आपकी हेल्प करेगा, आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करके देगा. ऐसा नहीं है कि आपको मतलब
पूरा अपना सारा एनालिसिस खुद करना है, आपको 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे की मेहनत को जो है ये चंद मिनटों में पूरा कर देगा। और बस आपका काम है कि आपने सिर्फ एक नज़र रखनी है अपने स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो फिलहाल के टाइम पर एआई के थ्रू नहीं, हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू की जाती है। बट अगर हम देखें लॉन्ग रन में तो आने वाला टाइम जो होगा वो इसी एआई का होगा। सो एआई जो है वो करता क्या है, तो इट्स एआई बेस्ड प्रोडक्टिव सॉल्यूशन विच इज आइनो फर्स्ट, और ये डेली फोरकास्ट देते हैं। आपको रोज के रोज ये बता दिया जाएगा कि कौन से शेयर जो है वो अगले 3 दिन से लेके 1 साल तक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दिखा सकते हैं। सो अभी आपको मेरी स्क्रीन पर एक दिखाई दे रहा होगा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अलग अलग जो है बाय सेल के शेयर्स दिखाता है, और इसी के थ्रू ही हम जो है अपने लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक रिसर्च लगाकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक पोटेंशियल रखता है अप ट्रेंड में जाने का और कौन सा डाउन ट्रेंड में जाने का। ओवर टू यू आंसर। The INO-first predictive algorithm includes 3 components. By using the first component, it's possible to identify the most promising investment opportunities within the Indian market. By utilizing the second component, it's possible to receive stock market intelligence to identify leading sectors within the Indian market, to receive insights regarding the direction of the main indices in India, and also to receive insights regarding sectors and indices that we should avoid right now. And the third component is basically a customized solution based on each client portfolio. We are providing AI-powered daily forecast for each client portfolio, and all those 3 components are being available within the Shoonya platform right now. We are going to demonstrate it during this webinar. In terms of the process that we are doing in order to generate the forecast, the algorithm is relying on quantitative data. Basically, we are utilizing data that coming from the entire financial market, from the different stock exchanges that we are following, the interest rate environment, the currency environment, the commodities environment. Basically, we are collecting very large and we are relying on large amounts of data sets. We are collecting the daily data and we are adding it to our stock database. We are managing database with historical data. And basically around the clock, the algorithm is learning from the new data that's coming all the time from the market, learning from the historical data, and also learning from the combined data. And by utilizing our technology, the algorithm is building the complex network that existing in the financial market, the thousands of correlations that are out there. And this complex network is being built by utilizing our technology without any human intervention. And basically, you are going to receive the output of this process, daily forecast for different time frames, for the short term, for the midterm, and also for the long term. And this is basically the predictions that are available within Shoonya platform on a daily basis. सो अब बात करते हैं आइनो फर्स्ट है क्या। सो आइनो फर्स्ट जैसा मैंने आपको बताया कंपनी है जो कि एआई बेस्ड सिग्नल्स प्रोवाइड कराती है अपने सभी क्लाइंट्स को। सो ये आपके लिए अवेलेबल है एक्सक्लूसिवली शून्य के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनका काम करने का तरीका क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढना, उसके बाद अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके मार्केट के लीडिंग सेक्टर्स और इंडाइसेस के ऊपर नजर रखना, और साथ ही एआई पावर्ड पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना। यहाँ पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन जो है इंडियन मार्केट में नहीं किया जाता, रेस्ट फॉरेन मार्केट में इसका जो भी है लीगल प्रावधान हो सकता है, बट ये जो है
आइनो फर्स्ट प्रोवाइड करता है इंडियन मार्केट में हमें प्रेडिक्शंस, सिग्नल्स और ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो कि आने वाले टाइम में अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड मूव दिखा सकती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, तीनों ही कैटेगरी के टाइम स्पेन में। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आंसर। अभी हम देखते हैं आइनोफर्स्ट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो जो डेटा आता है वो फाइनेंशियल डेटा वेंडर जो है वो डेटा भेजते हैं। 15 साल के स्टॉक के डेटाबेस के ऊपर रिसर्च की जाती है। सारी रिसर्च ऑटोमेटेड है। आप देखो, अगर आप खुद मंथली चार्ट देखोगे तो आप भी कई जगह गलती कर सकते हो, पर क्या होता है जब क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा, जब मशीन काम कर रही है तो वहां पर गलती होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं। अभी मॉडल के अंदर जो है वो 15 साल का डेटा जाने के बाद उसको लर्न करता है, मॉडल समझने की कोशिश करता है, अपना रिजल्ट बनाता है। उसके बाद जो है एआई पावर्ड सिग्नल और जो प्रोडिक्शंस है वो प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो शून्य के क्लाइंट्स हो या फिर वो अगर किसी भी कंट्री के किसी भी जो भी फोरकास्ट प्रोवाइड होती है अदर अदर स्टॉक एक्सचेंजेस में उनके थ्रू। तो इट्स ओवर टू यू आंसर। In terms of the technology, we are combining different AI approaches into one predictive algorithm. We are utilizing deep learning, artificial neural networks, genetic algorithms, supervised and reinforcement learning. And the goal of this process is basically to separate and to focus on the most predictable assets from the Indian market. So every day the algorithm is dividing the Indian market into into two parts: predictable part and unpredictable part. And the algorithm, by conducting the learning process, is trying to focus on the most predictable assets within the Indian market, basically. अब बात करते हैं एआई टेक्नोलॉजी का, कि किस तरह से एआई टेक्नोलॉजी जो है वो काम करती है। एक कटिंग एज डीप लर्निंग अप्रोच होती है, जो कि मॉडल खुद सेल्फ लर्निंग मॉडल होता है। मॉडल खुद की लर्निंग से सीखता है कि मैंने कितना अपडेटेड होना है। मतलब गलतियों से ही, जैसे बोलते हैं ना, गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है, तो मॉडल भी गलतियां कर करके ही सीखता है। तो हो सकता है कभी मॉडल से कुछ गलती हो गई हो, बट वो गलती भी उसको सिखाने का काम करती है। बट वो उस गलती से खुद सीखा है तो उसे वो गलती हमेशा याद रह जाती है। सेल्फ लर्निंग है, फ्लेक्सिबल और स्केलेबल है। साथ ही जेनेटिक एल्गोरिदम्स है, सुपरवाइज्ड और सुपरवाइज लर्निंग है। साथ ही जो है आपको जो लर्निंग है मॉडल की वो तो मतलब ऐसा नहीं मॉडल कुछ भी सीख रहा है, एक सेट ऑफ नॉलेज है जो कि मॉडल तक डिलीवर कराई जा रही है, जिसके अकॉर्डिंग मॉडल आपको आपके रिजल्ट्स निकाल के देता है कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड जा सकता है, कौन सा डाउन ट्रेंड, या फिर कहें तो किस स्टॉक में हमें पॉजिटिव या नेगेटिव मूव्स जो हैं वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ओवर टू यू आंसर। Thank you. So the process that we are doing in order to identify the best opportunities from the Indian market, we are taking the entire Indian market, we are applying our technology, the I know first technology, artificial intelligence, artificial neural networks, machine learning, genetic algorithms. We are focusing on the most predictable assets from the Indian market, from each specific universe, small caps, mid caps, or large cap. And then we are applying the signal filter in order to rank the different stocks and to identify the best, the top stocks for each time frame. And this process is being done on a daily basis. Every day before the market opening in India, you are receiving the best opportunities for each specific investment universe.
सो आई नो फर्स्ट का जो प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू, जेनेटिक एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके प्रिडिक्टेबिलिटी के फिल्टर लगा के, जो भी मोस्ट प्रिडिक्टेबल स्टॉक्स होते हैं उनके ऊपर फिल्टर लगा के, देन फिर सिग्नल के फिल्टर लगाकर हमें टॉप स्टॉक्स बताता है 6 टाइम फ्रेम्स में, जो कि 3 दिन से लेके 1 ईयर तक के होते हैं। इंट्राडे में मॉडल आपको 3 दिन के लिए बताया, हो सकता है स्टॉक इंट्राडे में चल जाए, वो कोई वो नहीं है, पर यह है कि मिनिमम 3 दिन से लेके 1 साल तक का जो है वो टाइम स्पेन पे मॉडल जो है अपनी प्रोडिक्शंस एंड सिग्नल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ओवर टू यू। Okay, and now for the first time in this webinar, I would like to introduce Ben Rubin, the head of our advisory team. Ben, the floor is yours. Thank you, Aaron. Thank you. The forecast comes in the shape of a heat map, as you can see here. The green cell represent the long position, while the red one represent short position. And in the Shoonya app, we are using 2 indicators to help us to focus on the best stocks. One is the signal that you can see positioned in the top of the square, and the other one is the predictability. The signal represents the predictive movement of the asset or the price deviation of each and every asset, and it helps us to rank the entire assets in the investment universe. So the strongest movement is belong to the square that is located on the top left corner of the forecast. As we can see here in the example, it's the Dixon stock. While going down to the right, we can see the stronger signal to the bottom of the forecast that is in the right bottom of the forecast. In this example, it's NTPC, which has the strongest signal for short position or going down stock. So the signal is actually help us to see the predictive movement of the asset, and we're using another indicator. It's the predictability, which help us to know how good the algorithm can read or can forecast the specific asset. Its Pearson correlation coefficient, it moves from -1 to 1, but making things more simple, and we actually taking it from 0 to 1. 0 represent 50% probability that the asset will move to the predicted direction. 1 represent 100%. And in both cases, we are actually looking for highest values in the signal and the predictability. And we're going to see a few examples right ahead. सो जो डेली फोरकास्ट है, अब आती है बात कि हम उसको रीड कैसे करेंगे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसी चीज़ से रिलेटेड आते हैं कि आई नो फर्स्ट की जो प्रिडिक्शंस होती है उसके ऊपर सिग्नल एंड प्रिडिक्टिबिलिटी होती है, उसको कैसे पढ़ा जाए। सो आई नो फर्स्ट आपको 2 चीजें, एक होता है सिग्नल, एक है प्रिडिक्टिबिलिटी। सिग्नल हमें जनरेट करके मॉडल देता है और प्रिडिक्ट करता है कि कितनी प्रिडिक्टिबिलिटी है स्टॉक के उस सिग्नल को फॉलो करने की। सो जैसे डिक्सन का एक एग्जांपल आपको दिखाना है, जिसका सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है 209 और प्रिडिक्टिबिलिटी है 0.49। तो जितनी प्रिडिक्टिबिलिटी जो है उसका जो रेशो है वो है 0 से 1 तक। सो 0 मतलब कोई चांस नहीं है कि जैसे सिग्नल्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग स्टॉक चलेगा। जब हम बात करते हैं 0.5 की, मतलब 50% चांसेस हैं। ऐसे ही 0.9 होगा तो 90% चांसेस हैं कि जो सिग्नल आए हैं अप ट्रेंड के या डाउन ट्रेंड के, 90% चांसेस हैं कि वो स्टॉक्स जो है वो उसकी तरफ, उस सिग्नल की तरफ या जो भी उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी है उसकी तरफ मूव करेगा। सो ऐसे ही जब हम बात कर रहे हैं सिग्नल्स के साथ प्रेडिक्टिबिलिटी की, तो प्रेडिक्टिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जहां पर हमें 0 से 1 तक की रेंज देखने को मिलती है और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे कि कौन से स्टॉक की रेंज जो है वो
प्रेडिक्टिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपने प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड कर सके। सो मिनिमम 3 डेज के टाइम स्पैन के साथ ये आपको देखने को मिलता है, और 3 मंथ्स, थ्री डेज के हमें टाइम फ्रेम के साथ देखने को मिलता है। सो 3 डेज, उसके बाद हमें 7 डे, फिर 1 मंथ, आपको फिर 3 मंथ और 1 ईयर तक की प्रिडिक्शंस जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ओवर टू यू। All right. So in the Shoonya platform, and then we have several features. As you can see here, we can find the heat map that we saw earlier. And we also can jump through some of the features, such as going to the large cap universe or the mid cap or the small cap, just by pressing a button. We can also skip between the time frames. We have 6 time frames for each and every forecast. This is the 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and 1 year. And you can see all the stats of the stock right here in those 2 tables. And you can actually buy and sell through the Shoonya app with no problems. You can also skip to and see some past forecast by clicking on the arrows on the bottom left corner of the app. So you have a lot of features that you can use reading the I know first forecast. Another feature is the indices feature, that you can see the most promising indices for the 6 time frames of the Indian market. For example, we can find here the Nifty IT or the Nifty 150 and many other indices that the algorithm provides on a daily basis for 6 different time frames. Over to you, Keshav. या श्योर। सो हमें जो सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में हम सिग्नल्स देख सकते हैं। 6 डिफरेंट टाइम फ्रेम में हमें प्रेडिक्शंस भी दिखाई देती हैं। सो यहाँ पर आपको जब आप शून्य पे आई नो फर्स्ट को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको AI पिक्स टैब में जो है वो स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। उन स्टॉक्स का आप यूज कर सकते हैं अपने आने वाले दिनों की इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम, 6 टाइम फ्रेम्स हैं 3 डेज से लेके 1 ईयर तक की, जहां पर हम अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और तीनों ही कैटेगरीज में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में हमें जो है स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं। और अराउंड 1500 स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आइनोफोर्स जो है वो अपने AI मॉडल से हेल्प लेकर उसको प्रेडिक्ट करता है। तो आप नीचे आपको जो है वो स्क्रॉल भी कर सकते हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं पेजेस पे आपको अलग अलग स्टॉक्स देखने को मिल जाएंगे, और डायरेक्टली आप आइनो फर्स्ट से बाय सेल भी कर सकते हैं। अगला टैब होता है हमारा इंडाइसेस का। इंडाइसेस टैब पर आप जाकर इंडेक्स का पता लगा सकते हैं कि इंडेक्स की मूवमेंट क्या रहने वाली है। अब आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हमें IT कंपनी का शेयर जो है वो अब ट्रेंड की तरफ दिखाई दे रहा है, और वहीं पर अगर हम मार्केट का फोरकास्ट चेक कर रहे हैं और हमें IT सेक्टर भी तेज दिखा रहा है, तो देखिए डबल कंफर्मेशन वाला काम हो गया कि दोनों कंफर्मेशन मिल गई आपको। एक मिल गई IT सेक्टर की तरफ से, एक मिल गई आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक की तरफ से। तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में अपनी पोजीशन या पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। ओवर टू यू। Another really interesting feature that we have in the Shoonya app is the I know first holding. After buying the stocks that you saw in the forecast, you can still get the forecast, you can still get the signal and predictability of each and every stock that is in your portfolio. So by that, you can follow on a daily basis what is the prediction for each and every stock that you hold in your portfolio. You can see, of course, the total valuation, the invested, and the gain and loss that you have for those stocks. But
again, you get the predictability and the signal to each and every stock that you hold in your portfolio, which is really important. If some stocks is changing their prediction, you can see it right away in your holdings. यस, सो हमें जो है एआई पेक्स और इंडाइसेस के अलावा हमें उन होल्डिंग्स के ऊपर भी प्रेडिक्शंस और सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमारी होल्डिंग जो हमने होल्ड कर रखा है शून्य पर। सो आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनीज हैं उनके क्या सिग्नल चल रहे हैं, क्या प्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है, वो सारी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। सो आपको इसके अंदर ये भी पता लग जाएगा किसी होल्डिंग के अगर सिग्नल्स बदल रहे हैं या उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी चेंज हो रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने डिसीजंस ले सकते हैं ट्रेड को। जैसे जो भी आपने ट्रेड ले रखा है उसमें फिर आपने चर्निंग करनी है, एग्जिट लेना है और एक्यूमुलेट करना है, किसी भी तरह के जो है आप उसके साथ अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। इट्स ऑल बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेड। Yeah, so let's see some a few examples from today from the Shoonya app platform. We can see the I know first forecast that was provided to our clients today. You can see several stocks for long and some stocks for short. For example, we can see those two stocks, guesswork, Tech Fibers, and the Honey Service Limited, that are jumping by 5 and 7%. In the green side of the map, and also stocks that going down, such as Cyanet and Polyplex Corporation, that actually going down right now according to the forecast. This is the 3 days time frame, that the short time frame that we have. In the small cap universe, or in the 1 month time frame from today, again, all the Shoonya clients got this forecast today from the small cap, that if you like to trade smaller caps stocks in the Indian market, you can also do it by switching here in the features above. And we can see that the stocks that are was provided by the algorithm today are jumping by more than 4%. All the 5 stocks that we can see here looking pretty good just from today. We're seeing a really good result. And even if you're a long-term trader or a swing trader, you can also get your forecast and get your stocks by the 3 months and even the 1 year time frame. You can see Dixon company that we also actually gave it the prediction in the first webinar with the Shoonya app, if you remember. It also looks pretty good for the 1 year time frame, and even jumping or going up today, while some of the stocks, as we can see in the bottom of the forecast, which has a negative signal, are going down to this minute. So can have different time frames and different cups for the Indian stocks. ओके, सो जैसे हमने पहले भी एक लाइव एग्जांपल के थ्रू देखा, जो 3 डेज के टाइम फ्रेम में हमने मिड कैप कैटेगरी से स्टॉक हमें दिखाया गया था, गर्वर टेक फाइबर्स लिमिटेड। वहां पर हमें 5% से ज़्यादा के मूव देखने को मिले, और धनी सर्विसेज लिमिटेड पर भी हमें 7% से ज़्यादा के मूव देखने को मिले। और साथ ही साइन और पॉलीप्लेक्स पर हमें जो है 2% से ज़्यादा की गिरावट किस तरफ के जो सिग्नल्स थे वो पहले दिखा दिए गए थे, और बाद में हमें 2% की गिरावट भी जो है वो इन स्टॉक्स में देखने को मिली। सो एआई जो है आपको प्रिडिक्शन दे सकता है, आपका काम है उस प्रिडिक्शन का इस्तेमाल करना अपनी रिसर्च के लिए। स्टॉक फाइंड आउट करके आपको एआई मिलेगा, अपनी रिसर्च करें, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड लें। सो नेक्स्ट प्लीज बैक। सो 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं, आपको सिग्नल्स जो दिए गए थे, जो प्रेडिक्टेबिलिटी दी गई थी, वो 1 महीने के टाइम फ्रेम के हिसाब से दी थी, और एक आज के इंट्राडे में ही आपको जो है यहाँ पर अच्छे मूव्स जो हैं वो देखने को मिले। सो प्लीज बैन, कैन यू प्लीज डाउन दिस। सो हमें यहाँ पर जो है
No, not that the last frame please. Yes, yes. So यहाँ पर हमें जो है 10% से ज्यादा 11% तक के 11% तक के मूव जो है वो हमें सिंगल डे में देखने को मिले। लाइक किरी इंडस्ट्रीज में 11% से 11.12% का मूव। स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमें एक ही दिन में 5 शेयर्स के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली, जहां पर मार्केट्स प्रेशर में थे, बट उसके बाद भी हमें एक अच्छी बेहतरीन तेजी इन शेयर्स के अंदर देखने को मिली है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो 1 ईयर के टाइम फ्रेम में भी आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह के मूव जो है आपको एक ही दिन में देखने को मिले हैं। सो जो भी हम आपको इसमें प्रोडिक्शंस देखने को मिलेंगी, सो मैं आपको यही पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि उसके ऊपर आप अपनी कुछ रिसर्च करें, अपने अकॉर्डिंग उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल जो भी आप देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट का या ट्रेड लेने का डिसीजन ले सकते हैं। ओवर टू यू। सो ये हमारी एक स्पेशल वेबिनार सेल है। आपको अगर आज आप सब्सक्राइब करते हैं आई नो फर्स्ट को, तो आपको मिलेगा 799 पर मंथ के प्राइस पर आपका ये प्यारा AI टूल फ्रॉम आई नो फर्स्ट, जो कि आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट में AI की हेल्प से अपने लिए स्टॉक फाइंड आउट करवाने में। और आज ही की सेल है। 6 टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप, मिड कैप, स्मॉल लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरीज में आपको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। इंडाइसेस की जानकारी देखने को मिलेगी और AI पावर्ड जो फोरकास्ट है या जो होल्डिंग है वो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो 799 पर मंथ इज द ऑफर प्राइस। यस, ओवर टू यू। Exactly. We are providing for the webinar participant a webinar sale. You have a daily forecast that you get to you every day. You have 6 time frames from 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and 1 year. You get the small cap, mid cap, large cap stock. You can just choose between all of those features. You have the indices forecast as well. And of course, the AI powered forecast for your holdings, that you can follow your own stock after you bought them. And all of that is in one package that costs you 709 Indian rupee per month. You get all of those features for 799 Indian rupee per month. That's for the webinar participant only. It's a special sale only for you. So feel free to join and getting the I know first forecast service. Of course, the service is available in the desktop platform and also in your mobile phone app. You can use I know first service in both of those ways. सो आई नो फर्स्ट जो है आपको जैसा मैंने बताया वेबिनार सेल भी है अवेलेबल। जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं कर चुके हैं वो लोग उस सेल का फायदा उठा सकते हैं। और साथ ही आपको आई नो फर्स्ट जो है वो डेस्कटॉप पर और मोबाइल ऐप पर दोनों पर ही यूज करने को मिल जाता है। दोनों ही जगह इस्तेमाल करके आप इसको देख सकते हैं और सभी स्टॉक की जो भी फोरकास्ट है वो आपको ये सजेस्ट करता है कि कौन से स्टॉक्स अप ट्रेंड दिखा सकते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आने वाले टाइम पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सो या ओवर टू यू देन। Yes, and the link is available right now in the chat, the subscription link. You can utilize this subscription link in order to subscribe to the service and to receive the best opportunities already today. And from that point, you're going to receive it on a daily basis before each market opening. तो लिंक जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, चैट बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू आप जो है यूज कर सकते हैं आई नो फर्स्ट को। आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और पूरा होलसेल पैकेज आपको सिर्फ 799 में मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और भी बेहतर बना पाएंगे।
Yes. All right, so let's see some few examples from the last few weeks and months from the iNorthwest service and the Shoonya app. We can see here the forecast from November 1st, 2024. This is a 3-day forecast, as you can see here, and the algorithm gave us the best stocks to invest in for the next 3 days. And you can see the stocks here to the right and the performance of them also as well. In those 3 days, they made some significant return. One of those stocks was Jacksonville Pharma Kettles, the pharma company, and we can see if we are diving into it, we can see what it's actually performed in those 3 days from the beginning of November, actually climbing up to almost 7.5%. And it's interesting to see that the Nifty actually went down in those time frame and go back down by minus almost 0.6%. So this is just a first example how to trade a small cap company in the 3 days time frame, a pretty short time frame, but even when the market goes down, and we saw that the Indian market right now is going down in the last few weeks, you can still find interesting investment opportunities helped by the iNorthwest algorithm. So this is one of the examples. यस, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी यहाँ पर दिखाया गया है कि जो iNorthwest की प्रीवियस फोरकास्ट थे कि क्या किस तरह से iNorthwest के जो भी आपको स्टॉक्स मिले उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। सो वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो मतलब हमें अगर हम बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो 3 डेज के लिए जो स्टॉक्स दिखाए गए थे वहां पर आपको जो तेजी देखने को मिल रही है वो 1% से लेके तो 15% से ज्यादा तक की तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बात करें उस टाइम के इंडाइसेस की, तो वो फ्लैट दिखा रहे थे। और बट जो स्टॉक्स हमारे iNorthwest ने एआई के थ्रू प्रिडिक्ट किए थे, उसमें हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसको आप देख सकते हैं बेंचमार्क की जो लाइन है वो ये रेड वाली लाइन है, और ब्लू वाली जो लाइन है वो उस स्टॉक की है जो कि एआई ने आपके लिए प्रेडिक्ट किया था। और आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, here we can find another example for 7 days forecast. We can find that the strongest stock that has the strongest signal actually is the 6 tree moons that we can see it in the top left of the forecast with some good predictability and some good signal. And we can see that the return of this specific stocks was 17% return in a term of a 7 days time frame. This is also a small cap forecast. And again, if we're checking the chart of this specific stock, we can see that the index, the benchmark, is actually going down, the Nifty, while this stock made almost 70%, as we saw earlier, in a 7 days time frame. अभी बात करें अगर 7 डेज के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर भी हमें जो है 3% से लेकर 18% तक के लगभग 18% तक के मूव्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो है स्टॉक्स के अंदर आपको जो भी स्टॉक की पहले प्रेडिक्शन हुई होती है उसकी परफॉर्मेंस भी दिखाई जाती है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है अपने रिस्पेक्टेड टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर 63 मूव्स का जो स्टॉक है आप देख सकते हैं, जब बेंचमार्क इंडेक्स जो है वो डाउन साइड जा रहा है, बट लेकिन स्टॉक जो है वो अपने नए शिखर की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है।
ये 7 डेज के टाइम फ्रेम का जो है हम एग्जांपल देख रहे हैं कि 7 दिन में स्टॉक के अंदर जो है वो बेहतरीन तेजी हमें देखने को मिली है। And I saw some question about people asking about the longer time frame of trading, swing trading. So you have an example, a very good example here for 3 months trade. We saw the stock persistent in the leading the forecast with the combination of a good signal and really good predictability. And these stocks made in 3 months time frame almost 22%. We can see the other stocks that are performed here to the right compared to the benchmark that actually went down. And again, if we are looking at the persistent company at the chart, we can see that it's going up in a 22% in the last 3 months, while the benchmark, the Nifty 50, actually went down by 4%. Stocks that going up against the trend. We can also find it here in the I know first universe. यस, तो अगर हम लार्ज कैप कैटेगरी से भी देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में 21.76% का जो मूव दिखाया है वो दिखाया है परसिस्टेंट सिस्टम्स के स्टॉक ने। और आपको मतलब ऐसा टाइम जहां पर आप देख रहे हैं कि बाजार पे चौतरफा प्रेशर देखने को मिल रहा है, वहां पर भी इतनी जबरदस्त तेजी हमें देखने को मिल रही है आई नो फर्स्ट के द्वारा प्रिडिक्ट किए हुए स्टॉक्स की तरफ से। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज देन। सो जो ये आपको पिंक वाली लाइन मार्क है, ये लाइन जो है ये हमारे निफ्टी की लाइन है जो कि 4% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें परसिस्टेंट की तो 22% से ज़्यादा का बढ़त हमें इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सो ये है पावर ऑफ एआई। बट हमें ये देखना है कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए बिल्कुल सही है जहां पर हम इन्वेस्ट करके अपना ट्रेड लेकर अपने लिए एक अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ओवर टू यू। Yeah, and we see another example of AUIM synthetics that also jumped by 30%, 60% in 3 months, a really remarkable return. Also, the stocks tips in LDD made a 50%. This is from the small cap universe. Before we saw it from the large cap universe. But you can just choose your universe if it's mid cap, large cap, or small cap, and you will see the forecast predictions. So these specific stocks almost jumped by 60% in a 3 month time frame, again, while the benchmark went down by 3%. And in the same way, we can find stocks in the 1 year time frame. If you're looking for a long investment, you can find some stocks with high predictability and really high signal in the longer time frames. And you can see the returns that they made in the last year compared to the benchmark that made it 22%. You can see here all the returns, and the average of those stocks was 78%, while the benchmark made 22%. We have a few examples for the 1 year, which is with high signals and high predictability that you can use from large cap, mid cap, and small cap. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3 मंथ्स के अंदर भी कितनी अच्छी एक परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जहां पर आपको 60% के रिजल्ट जो है एवीएम सिंटेक्स के स्टॉक में हमें देखने को मिले थे। और पूरी तरह से जब मार्केट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है, वहां पर भी एआई ने जो आपके लिए प्रेडिक्ट किया उसके अंदर हमें 60% के रिटर्न एवीएम सिंटेक्स के स्टॉक में देखने को मिले थे। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग जो भी हमारे कैटेगरीज हैं, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स में आप एआई का यूज करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकते हैं। आपको स्टॉक प्रेडिक्ट करके दिए जाएंगे, आपका काम है उन स्टॉक्स के ऊपर अपनी रिसर्च लगाना, अपनी स्टडी लगाना और उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेना।
आपको कोई किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट हाँ रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस को छोड़ के आप प्रोडिक्शन का यूज कर सकते हैं, उन्हें उन स्टॉक को रिसर्च करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 1 ईयर के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमें 190% का रिटर्न देखने को मिला है, और मिनिमम अगर हम बात करें तो 28% के रिटर्न हमें देखने को मिले हैं इन स्टॉक्स में। सो 28% से लेके 190% तक के रिटर्न हमें एक साल के टाइम फ्रेम में दिखाए हैं इस एआई प्रेडिक्शंस ने। सो जब अगर हम बात करें बेंचमार्क की, तो बेंचमार्क 22% अपसाइड दिखा रहा था, वहां पर 198% का हमें उसके अगेंस्ट में रिटर्न देखने को मिला। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी में ईयरली बेसिस पर 22% से लेके हमें 140-190% तक के लेवल्स जो हैं वो रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। ओवर टू यू बैन। All right, so let's talk a little bit about our artificial intelligence trading strategies. We're just going to give you a short examples of how do we provide our service to the institutional clients and how they build their strategies. And so in this case, we are using the level 1 geeks and level 2 geeks from the S&P 500. The S&P 500 universe is actually divided to two parts, two levels. One of them is the level 1 that has the major 11 sectors, and the level 2 that has 24 subsectors. And we are using those universe in our strategy, and of course, the S&P 500 stocks. We can see here the examples for those two strategies. One of them is a stock strategy that we are picking stocks from the S&P 500 universe, and the other one it's the ETF strategy that we are the algorithm is providing once a month the best sectors to be in for the following month. सो आई नो फर्स्ट के जो है GICS लेवल 1 लेवल 2 आप देख सकते हैं, इसमें हमें एनर्जी इक्विपमेंट सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, फ्यूल, सभी तरह के हमें एनर्जी, मिनरल्स, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल्स, हर एक लेवल पर जो है वो आई नो फर्स्ट का हमें प्रोडिक्शंस देखने को मिल जाएंगी। इंश्योरेंस हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, ट्रांसपोर्ट हो, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, होम बिल्डर्स, हर एक, बायोकेमिस्ट्री, हर एक मेटल्स, हर जगह पे अपने प्रोडिक्शंस एंड सिग्नल्स जो हैं वो आई नो फर्स्ट के हमें देखने को मिल जाएंगे हर सर्विसेज, हर सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड बैन प्लीज। सो स्ट्रेटेजीज भी हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रही हैं S&P 500 में। आउट परफॉर्म किया, टोटल रिटर्न जो है वो 227% का है, वहीं पर S&P का जो रिटर्न है वो 73% का है, और आउट परफॉर्म हुआ ये 154% से। और स्ट्रेटेजी 2 जो है वो ये स्टॉक्स था, और स्ट्रेटेजी 2 जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की है, जहां पर हमें 73% के रिटर्न जो है वो S&P में है, और 161% के रिटर्न जो है हमें वो स्ट्रेटेजी के थ्रू IKF स्ट्रेटेजी से आते हुए दिखाई दिए हैं। सो आप देख सकते हैं AI जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज दिखा रहा है कि वो हमारी किस तरह से हेल्प कर सकता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। बट याद रखिएगा, AI का यूज हम सिर्फ एक लिमिट के तौर पे फिलहाल अभी कर रहे हैं। हमें अपनी रिसर्च जरूर करनी है, AI पर डिपेंडेंट हमेशा नहीं रहना है। हम सिर्फ यूज कर सकते हैं उसके सिग्नल्स का, उसके प्रोडिक्शंस का, उसके सजेस्ट किए हुए स्टॉक्स का, बट हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग हम जो है अपने ट्रेड्स जो है वो प्लान कर सकते हैं, मे बी फॉर मिनिमम आपको जैसे बताया 3 days to 1 year तक के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ओवर टू यू मैन। And using our technology and using the signals and the predictability, we have developed those two strategies that we saw, that the algorithm picks the best stocks out of the S&P 500, 25
stocks from the S&P. And actually, this strategy was sold to investment house in Israel that is provided as a mutual fund. And it's a really something that we are proud of. So we can see here the stats of this specific strategy, each and every month return compared to the benchmark and the risk stats that are pretty good in this investment universe. Yeah, let's go over to you, Kashyap. जो हम लोग S&P 500 की स्टॉक स्ट्रेटजीज के कैरेक्टर्स को हम देख रहे थे, तो लॉन्ग ओनली में भी हमें देखने को मिल सकते हैं. सो लॉन्ग ओनली में S&P 25 S&P टॉप 25 S&P 500 पे जो S&P 500 स्टॉक्स को लेता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को लेकर उन्हें फिर रिफाइन करके उसके ऊपर प्रोडिक्शंस प्रोवाइड करता है. सो अगर हम बात करें स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस की, तो 73% का रिटर्न S&P पर है और ओवरऑल रिटर्न जो आइनो फर्स्ट पर आया है वो 227.93% का आया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस, सो आउट परफॉर्मेंस जैसे मैंने आपको बताया 154.54% की रही है स्ट्रेटेजी 1 पर. लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजी ये है जहां पर आपको परफॉर्मेंस जो देखने को मिली है वो आउट परफॉर्मेंस जो है 154.54% की है और आउट परफॉर्मिंग मंथ्स 57.54. Great. Yeah, and as we said, we have many strategies that we provide to our institutional clients. And if you are interested in one of them, please contact us by the mail or by our website. And I want to go some really quick examples from the US market which was really interesting in the last few weeks after Trump's got elected to the US president. We saw a lot of tectonics movements in the stock market, and as the crypto and as the AI universe and many other stocks as Tesla and the others that moved. And this is a quick example for the US market. We have a 3 days forecast from the November 8th November 8th date. And we see that the algorithm chose some interesting stocks to be in: Coin, Plantier, Lumen, Tesla, MicroStrategy, Hood, and AFRM from the US market, from the entire US market. We can see the average return compared to the S&P. As Yaron said, we have a forecast for 50 stock exchanges around the globe, and one of them is the US, which is a really interesting one. Another forecast is for the 7 days that you can see here. The algorithm picks the best stocks from the US market, and the average of this forecast was around 80%, while the S&P moved by almost 5%. सो एल्गोरिथमिक स्टॉक फोरकास्ट जो 3 डेज की हमें देखने को मिली थी यूएस स्टॉक्स के ऊपर. सो यूएस स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस जो है वो कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है 3 डेज में. 8 नवंबर को अगर हम बात करें तो ओवरऑल S&P 500 की एवरेज 0.547 थी और आईएनओ फर्स्ट का जो एवरेज आया था वो 13.79% का आया था. सो जो स्टॉक सजेस्ट किए थे उसके अंदर आप देख सकते हैं 10 में से आउट ऑफ 10 देयर आर 9 स्टॉक्स जो कि पॉजिटिव में थे. और अगर हम बात करें 7 डेज के फोरकास्ट की 4 नवंबर को, तो लॉन्ग ओनली ट्रेड्स थे 10 के 10 ट्रेड में आउट परफॉर्म हुआ था 4.76% के S&P 500 के रिटर्न, और उसके अगेंस्ट में आईएनओ फर्स्ट के 18.66% ने का रिटर्न डिलीवर किया था. सो जो स्ट्रेटजीज हैं एआई की वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्ट्रेटजीज हैं, और ऐसी ही स्ट्रेटजीज का यूज़ हम इंडियन मार्केट में भी कुछ टाइम बाद देख पाएंगे. बट फिलहाल के लिए जो है सिर्फ स्टॉक्स पे अभी अवेलेबल हैं जहां पर हम लॉन्ग ओनली ट्रेड्स ले सकते हैं, और शॉर्ट ट्रेड क्योंकि इंडियन मार्केट्स में अलाउ नहीं होते हैं पोजिशनली
होल्ड करने के लिए। सो मेरे जैसे कि आपको पता है कि आइनो फर्स्ट जो है वो मिनिमम 3 डेज के फोरकास्ट करता है, 3 डेज टू 1 ईयर का। सो आप लॉन्ग ओनली ट्रेड्स के थ्रू आप अपने रिसर्च लगा सकते हो, और ऐसे कोई स्टॉक जो कि आपके पास होल्डिंग में है और वो आपको शॉर्ट ट्रेड में दिखाई देता है, तो वहां पर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं। Yeah, and then we have a variety kind of packages in our website. If it's world indices, if it's fixed income, commodities that I saw a few people asking about the commodities. We can see a really good prediction about the gold and the silver in the last few months. This is a 3 months forecast, so it's also it can be provided in our website. So इंडेक्स फोरकास्ट की बात करें तो इंडेक्स फोरकास्ट में S&P 500 को आउट परफॉर्म किया है नो फर्स्ट। S&P 500 के जो रिटर्न थे वो 0.09% का था, और वहीं पर आपको आइनो फर्स्ट का जो रिटर्न देखने को मिला वो 11.18% का था। और बात करें स्टॉक फोरकास्ट की, तो स्टॉक फोरकास्ट 1 मंथ के पीरियड पर 10 में से 9 स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, जहां पर S&P नेगेटिव था, और आइनो फर्स्ट का जो एवरेज था वो पॉजिटिव 13.40% था। और वहीं अगर हम कमोडिटी की बात करें तो आउट ऑफ 10 कमोडिटीज 9 आर इन पॉजिटिव। सो यहाँ पर भी जो आइनो फर्स्ट का एवरेज था वो 11.05% का था। ग्रेट। Okay, in the last webinar, we gave you the forecast for the next month, as we're gonna do in a few minutes, and we're gonna show you what the algorithm think about the Indian market for the next month. But in the last webinar, we gave you a few indices that the algorithm liked, and as you can see, the index that was in the top of the table was the Nifty VIX, the volatility, and it did went up by almost 10%, more than 10%, sorry. We also saw the Nifty PRX1, which is the inverse index of the Nifty 50, that went up by 5.26%. We can also saw the Nifty IT, which is the technology sector in India, and it went up in that time frame since the prediction was given in the last webinar. So and all of that happened while the market went down. We can see that the Nifty 50 and the Nifty 500 went down in the last month. So the algorithm can find you the indices and the best indices to be in for the next month, and you can know where to pick your stock from. In this example, we saw the Nifty IT and the Nifty GS Composite, which related to the US government bonds of the Indian market. And so the algorithm provides us a really good forecast for the 1 month prediction. यस। सो अगर हम बात करें लास्ट मंथ के वेबिनार फोरकास्ट की, तो लास्ट मंथ की जो फोरकास्ट थी उसके अकॉर्डिंग अब अगर हम बात करें तो इंडिया विक्स को बताया था कि इंडिया विक्स पे हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ पर विक्स जो है वो बढ़ा है। निफ्टी 50 जो PR1 इनवर्स या निफ्टी IT और निफ्टी GS कॉम्पोजिट पे हमें बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी 50 निफ्टी 500 जो है वो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहे हैं। सो ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम था लास्ट जो वेबिनार हुआ था उससे लेके अभी तक की परफॉर्मेंस जो निफ्टी ने दिखाई है। And let's see what's the algorithm think about the next month. Let's see the forecast for the next month. And as we can see, the Nifty VIX is still in the top of the table. We are still expecting some volatility in the Indian market. We can see the Nifty IT is still looking good. The tech sector in the Indian market looks quite positive. Nifty Midcap 150 looks good, and the Nifty GS 30-year, and again the bonds look quite positive.
But also we are expecting some volatility in the markets. As we can see, the VIX is in the upper side of the table. We can still find opportunities in the market, as we showed you in this webinar. Also, when the market goes down, the I know first algorithm can identify the promising investment opportunities to go even up when the market goes down. So our forecast service can help you to find and pick up the best stocks in the Indian market, if it's for shorter time frames or longer time frames, if it's for a mid cap or small cap or large cap stocks. So you can use our forecast to do so. यस, सो अब अगर बात करें नेक्स्ट मंथ के फोरकास्ट की, तो निफ्टी आईटी जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव दिखा सकता है। निफ्टी मिड कैप में हमें एक अच्छे जो मूव्स हैं वो आते हुए दिख सकते हैं, और विक्स अभी भी थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, क्योंकि विक्स को अभी भी ज़्यादा ग्रीन मार्क किया हुआ है, तो वहाँ पर हमें वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यस। Also, you want to know what's the best script for the next month? Of course, you can sign in to our service. Again, it's special for the webinar participant. We have the daily forecast with 6 time frames: small cap, mid cap, large cap stock, the indices forecast, and of course the customized AI forecast for your holdings, that you can follow your stocks and see the forecast for your stocks. All of this is in 799 Indian rupee per month. And so sign in and get the Shoonya and I know first service right now. सो जो लोग भी अब बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक देखना चाहते हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, सो वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी आई नो फर्स्ट को। 799 पर मंथ की प्राइस पर स्पेशल वेबिनार सेल है, और एक होलसेल पैकेज है डेली फोरकास्ट का 6 टाइम फ्रेम में। स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, और कस्टमाइज एआई पावर्ड फोरकास्ट फॉर हमारी होल्डिंग के लिए भी हमें देखने को मिलेगा। सो ये इंट्रोडक्शन प्राइस है 799 पर मंथ, स्पेशल वेबिनार सेल। अभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लॉग ऑन कीजिए shoonya.com पर, और लुफ्त उठाइए हमारे एआई का, और बनाइए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी सुखद और भरोसेमंद। Yes. The links actually for the subscription links, I see that a lot of people are asking how they can join. We have just pasted the subscription links to the window, to the webinar chat, so you can use it in order to subscribe. And also you can compare it with the regular pricing that we have in the I Know First website, in order to see how significant is also the value proposition and the pricing for Shoonya clients only, basically. Yeah, I'll make it shorter for you. If you join the Indian forecast in the I know first website, it's gonna cost you around 230 US dollars, and here you get it in a really good price for the next 24 hours. So again, you're getting a lot of features, the 6 time frames, the small cap, mid cap, large cap indices, and your holding forecast for 799 Indian rupee per month. I think it's a really good deal that we offer you here. And I see that we have a lot of questions for the webinar. So maybe, Keshav, what do you say? We're going to answer some questions. Yeah, sure. So एक बार मैं भी बता, let me explain the actual price of I know first, and what are the benefits they are getting from No this problem. webinar. So जो actual pricing है वो I know first का, that's 149 US डॉलर जो है वो है एक्चुअल I know first का, और ये सेम आपको जो पैकेज है वो इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ 799 पर मंथ पर मिल रहा है आज और अभी के लिए। सो अभी आप जाके लॉग इन कीजिए और अपने आई नो फर्स्ट के सब्सक्रिप्शन को पूरा कीजिए, और लुत्फ उठाइए एआई की उस जर्नी का जो कि आपकी हेल्प करेगा
स्टॉक फाइंड आउट करके देने में, जो आपकी घंटों की मेहनत है उसको वो चंद मिनटों में पूरा कर देगा। सो अभी के अगर बात करें हम, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप लोगों ने डाले हुए हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दे पाएं। So yes, Ben, over to you. Let's pick some questions and answer them. Yeah, I see a lot of people ask about the time frame and when to get in and where to get out of the trade. So if you're getting the forecast today and you're seeing a 3 days time frame trade, so you need to basically stay in the stock for 3 days. Of course, if you're having a significant return even before those 3 days, you can sell the stocks and take the profit. It's all up to you and your risk level, but basically the algorithm gives you the time frame to be in the stock for the specific trade. So if you get the forecast today and you see a 1 week forecast, you're supposed to stay in the stock for those 7 days and sell it after 7 days. But if after 7 days you're still seeing the stocks in the 2 weeks, in the 1 month or 1 year, so basically the algorithm tells you that you can stay in the stocks for a longer time frame, and it's still good to hold the stock to those time frames. Yes, so जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू टाइम फ्रेम, सो यस, जो स्टॉक आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखने को मिल रहा है, मतलब 3 days में भी है, 7 days में भी, 14 days में भी, 1 month, 3 months, 1 year, हर जगह जो आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है, वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकता है। उस स्टॉक के अंदर आप ज़रूर इस स्टॉक को वॉच कर सकते हैं, उसको खुद भी अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ऐसे स्टॉक्स जो कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हैं, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और बात करें अगर आपको जैसे है कि 3 days के लिए कोई स्टॉक सजेस्ट किया गया है, तो एटलीस्ट आपको 3 दिन उसके अंदर रहना है। उससे पहले अगर आपको बेटर मूव्स मिल जाते हैं, आपको लगता है कि यस, जो मैंने चाहा था, जितना इन्वेस्टमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो आ गया है, या आपको कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ लगता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आप हैं अपनी पोजीशन से पोजीशंस को जो है आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ओवर टू यू। Yeah, let's see some other questions that you find. We got a lot of questions here. Let's see. They're asking if it's a different plan for the large cap, mid cap, and small cap. And now you get all the time frames and all the features that we saw in one plan that's gonna cost you 799 rupee per month. It's all included. You don't have to buy different time frames or different plans for different stock size. It's all in one package. Right. For limited time, it's all included, and it's very good deal actually then. To get all included solution. So that in the chat you can find the subscription links. I see a lot of questions regarding how to subscribe. So just use the the webinar chat for that. Additional question, yeah, you answered the questions regarding the time frame. We are encouraging you to use the predictive algorithm indicators and to focus on the most predictable assets in each forecast. All the analysis that we are doing are supporting this fact. So please try to focus on the most predictable assets, even if you are trading and focusing on short-term trading. Utilize all the different time frames that the algorithm is suggesting. Focus on the scripts with the strongest predictability and highest predictability, and also strongest signal. Yeah, also I see. Sorry, Keshav. It's okay. So जो questions है related to कि आपको कोई different
कैटेगरीज के आपको स्टॉक्स मिल सकते हैं, मतलब जैसे लार्ज कैप या कोई अलग प्लान्स जो लार्ज कैप के लिए हो या पर्टिकुलर मिड कैप स्मॉल कैप के लिए हो, नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है। 799 में आपको पूरा होलसेल ही पैकेज मिल रहा है, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, जिसका यूज करके आप होलसेल पैकेज ले सकते हैं आइनो फर्स्ट का। और साथ ही आप की जो भी फोरकास्ट है, आप जो फोरकास्ट देख रहे हैं वो हायर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड हायर सिग्नल वाले फोरकास्ट देखें, जहां पर आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। यस डन। I see question about the data that we are using. In order to utilize and to generate the forecast, we are utilizing quantitative data sets that basically coming from the entire financial market, the interest rate market, the equities market, the commodities market. We are combining all those data and we are collecting all the data that coming from the different asset classes. And basically the predictive algorithm is building the complex network that exists in the financial market, the thousands of correlation sets between the different assets. And the output of this sophisticated process is a very clear and direct forecast with the best opportunities for the different time frames. सो जो भी आप अपने डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको जितने ज़्यादा जो भी स्टॉक है जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फ्रेम में होगा उसके ऊपर आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और ऐसे स्टॉक्स जो कि एफएनओ में भी काम करते हैं, उसके ऊपर आपको जो पर्टिकुलर स्टॉक्स पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर हम फिलहाल अभी आइनोफर्स्ट जो है वो रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं करता या प्रेडिक्शंस प्रोवाइड नहीं करता। हायर प्रेडिक्टिबिलिटी वाले स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखें, और हायर प्रेडिक्टिबिलिटी विथ हायर सिग्नल, ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल जाएंगे। यस यार, सॉरी। Okay, Ben, any other questions that you feel that we need to address? I think we answered most of them. Some of you ask about the stop loss, but again, stop loss it's according to your risk level. If you feel satisfied with the amount, with the price of some returns that you have, so feel free to sell the stock. We cannot actually provide you a stop loss because we have different risk levels to each and every individual investor. And I see another question, if there's a chance of a wrong prediction. Yeah, not all the predictions are 100% right. Some of them are wrong, but the majority of the predictions is good, especially if we're focusing on the longer time frames where we have a good predictability, high predictability, and the highest signals. So again, as Yaron said, we are focusing you on the long time frames to get the optimal results. Right? And Yes. please, sorry. Yeah, no, it's okay. So स्टॉप लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो स्टॉप लॉस जो है वो आपके रिस्क एपेटाइट पे है। जितना आपका रिस्क है आप ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉप लॉसेस रखिए, और ध्यान दीजिए सिग्नल्स और प्रेडिक्टिबिलिटी अगर चेंज हो रही है तो आप कुछ पहले भी उस स्टॉक से एग्जिट ले सकते हैं। मे बी आपको वहाँ पर अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को टाइमली बुक कर लीजिए अगर आपको वहाँ पर सिग्नल्स एंड प्रेडिक्टिबिलिटी आगे चेंज होते हुए नजर आते हैं तो। इट्स अ होलसेल पैकेज 799 पर मंथ, सभी कैटेगरी के स्टॉक्स, कस्टमाइज एआई पावर्ड फोरकास्ट फॉर योर होल्डिंग्स। आपकी होल्डिंग्स के ऊपर आपको सिग्नल्स एंड प्रेडिक्टिबिलिटी जो है वो आयनो फर्स्ट के अंदर दिखाई देंगी। वेब और मोबाइल ऐप आप दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं, चाहे आप trade.shoonya.com चलाते हो चाहे आप शून्य मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रेड करते हो, आपको दोनों ही जगह पर आयनो फर्स्ट का फीचर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। 6 टाइम फ्रेम में डेली फोरकास्ट 3 days to 1 year, और
अच्छे प्रेडिक्टिबिलिटी, अच्छे सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आपको अच्छे ट्रेड्स दिखाई देंगे. सो आई थिंक yeah, sir, that's it. Anything to cover? Anything more to cover? Dan? I think we got it all. We got it Thank you. all. Maybe last question, how many stocks will be suggested on the 3 days time frame? For each time frame, you're going to receive 10 stocks. So 10 stocks for the 3 days, 10 stocks for the 7 days. Some of the stocks, of course, repeating themselves, but it's a very positive indicator, basically. सो जो क्वेश्चन है रिलेटेड कि कितने स्टॉक्स हमें देखने को मिलेंगे, तो 10 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे आपको, ईच कैटेगरी ईच टाइम फ्रेम. ठीक है, 10 स्टॉक लॉन्ग साइड पे, 10 स्टॉक शॉर्ट साइड पर दिखाता है, बट शॉर्ट का ट्रेड इंडिया में ले नहीं सकते. सो मिनिमम 3 डेज का ट्रेड है. सो दैट्स वाई आप उसको लॉन्ग साइड पर यूज कर सकते हैं. 10 स्टॉक टाइम, ऑल 6 टाइम फ्रेम में तीनों ही कैटेगरीज के स्टॉक्स इन 799 ओनली for a month. Not a big deal. It's a great deal. Yeah. Okay. Okay. So thank you, Yaron sir. Thank you, Ben, for giving this great product to the Indian market. It's AI, and now the world is going to dependable on the AI. So why not this financial market? And so now we are going to see some major changes where AI can help people to invest their money smartly. Not only smartly, very smartly. Yeah. Yeah, thank you very much, Keshav, for the translation and for being here with us in this webinar. Thank And you. Thank you, man. My Thank you, pleasure. and Keshav. thank And Ben, Thank thank you, you very everyone. much. Thank you, audience. Thank you for joining. Once again, thank you, Aaron sir. Thank you, man. Thank you very much for the great webinar, Ben, and thank you for the great questions today. See you soon. See you soon. See you soon. Bye bye. Thank you. bye-bye.